Video we will see 200 most important and repeated one word substitution. So these are very important और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, so ये याद करते हैं. इन नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, उसको हम बोलते हैं ऑडियंस. ये तो इजी है. वन हु कंसिडर्ड द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, जो कि बाकी सभी का भला चाहता है और सभी की खुशी चाहता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट. ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको बोलते हैं एथीस्ट. नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट होती है, ऑटोक्रेसी. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट इन्फेक्ट हो गया, उसको काट देना, उसको बोलते हैं एम्पुटेट. ए प्लेस फॉर अम्यूनिशन एंड वीपन्स, यहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं, आर्सेनल. ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव. ए मैन हु डज ए थिंग फॉर प्लेयर एंड नॉट जस्ट एज ए प्रोफेशन, एमेच्योर. गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी. एनिमल प्लांट्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक. एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो दोनों जगह रहते हैं, एम्फीबियन. वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, जो दोनों हाथ यूज कर सकता है एक साथ विद ईज, एम्बीडेक्स्टर. अलोयंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, एलिमोनी. A collection of poems, anthology. Voluntary giving up of throne in favor of someone, abdication. A person appointed by two parties to solve a dispute, arbitrator. A person who studies stars, planets and other, astronomer. एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग. ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो स्टार्स और हैवी प्लैनेट्स और अदर बॉडीज़ की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, और जो उनके इफ़ेक्ट, उन बॉडीज़ का इफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स पर हो, उसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं. ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी. A statement which is accepted as true without proof, axiom. A list of headings of the business to be transacted at a meeting, जो भी मीटिंग में डिस्कस करना हो उसकी लिस्ट को क्या बोलते हैं? एजेंडा. One who is out to destroy all governance, law and order, anarchist. An annual calendar with position of stars, almanac. The practice of having two wives or husbands at a time, bigamy. A lover and collector of books, bibliophile. A collection of flower, bucket. Government by the officials, bureaucracy. A person, nation that is involved in war, belligerent. An event which happens once in a 2 year, once in a 2 year, biennial. The act of speaking disrespectfully about sacred things, धार्मिक चीज़ें के बारे में गलत बोलना, disrespectfully बोलना, उसको बोलते हैं blasphemy. A nursery where children are cared for while their parents are at work,
यहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है जब उनके पेरेंट्स वर्क पे होते हैं, उसको बोलते हैं क्रैच। ए पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन। वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए मोटर कार, चौफर। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम के इंचार्ज को बोलते हैं क्यूरेटर। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, carnivorous. One who feeds on human flesh, cannibal. Belonging to or living at the same time, contemporary. A place for luggage at railway station, cloakroom. Center of attraction, cynosure. A critical judge of any art and craft, connoisseur. A religious war, crusade. A one who teaches dancing, choreographer. A person who is bad in spellings, cacographist, जिसकी राइटिंग बैड है। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल, उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट क्या हुआ, हु इज बैड इन स्पेलिंग। कैलीग्राफिस्ट क्या हुआ, हु राइट्स ब्यूटीफुल। साइनिक, वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिज फेलो मैन, साइनिक। वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ, कॉन्वलेसेंट। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, कैवेलरी। ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीजेज, कार्डियोलॉजिस्ट। One who draws map, cartographer. The sleeping rooms with several beds, especially in a college or institution. Dormitory. Dormitory क्या है, sleeping rooms with several beds. Drawn. A game that results neither in victory nor in defeat, जिसमें ना हार ना जीत हुई, वो क्या ड्रॉ हो गई। A poem of lamentation, elegy. Words which are inscribed on the grave or the tomb in the memory of the buried, epitaph. Lasting one day, ephemeral. A person who is womanish, effeminate. A person who leaves his own country and goes to live in another, उसको बोलते हैं emigrant. Fit to be eaten, edible. Next, practice of talking too much about oneself, जो अपने बारे में ही बोलता रहता है बार बार, egotism. A book that contains information on various subjects, encyclopedia. One who is devoted to the pleasure of eating and drinking, epicure. One who deals in flowers, florist. One who is very selective in one's taste, fastidious. One who is filled with excessive and mistaken enthusiasm in religious matters, fanatic or bigot. Causing death, fatal. One who believes in fate, इसको बोलते हैं fatalist. An exact copy of handwriting, printing, etc. Facsimile. The animals of a certain region, fauna. The plants of a particular region, flora. Fauna and flora सुना होगा। Fauna क्या है, the animals of a certain region. फ्लोरा क्या है, द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्रेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। फ्यूजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, फ्यूजिटिव बोलते हैं उसको। इजिली ब्रोकन, फ्रेजाइल। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमन, फेमिनिस्ट। ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, ग्रैनरी। Murder of
race, genocide. Animals which live in flocks, gregarious. A place for housing aeroplanes, hangar. A place for bees, hive. The art of cultivating and managing gardens, horticulture. Murder of man, homicide. A vehicle which is used to carry a dead body, hearse. One who believes that player is the chief good hedonist. Next, a line at which the earth and sky seem to meet, horizon. Holding office without any remuneration, honorary. One who acts against religion, heretic. One who lives on herbs, herbivorous. A person who is unable to pay his debt, उसको insolvent भी बोलते हैं, bankrupt भी बोलते हैं. Insolvent भी और bankrupt भी. A sound that cannot be heard, inaudible. That cannot be easily approached, inaccessible. Incapable of being corrected, incorrigible. Next, incapable of being repaired, irreparable. Incapable of being read, illegible. Incapable of being avoided, inevitable. Incapable of being practiced, impracticable. A person who comes to one country from another in order to settle there, immigrant. One too strong to be overcome, invincible. That cannot be erased, indelible. Traveling under another name than one's own, incognito. One who does not tire easily, indefatigable. One who is free from all mistakes and failures, infallible. One who supervises in the examination hall, invigilator. One who journeys from place to place, itinerant. A home or room used for ill or injured people, infirmary. Murder of an infant, infanticide. Soldiers who fight on foot, infantry. Liable to catch fire easily, जिसको जल्दी आग लग सकती है, inflammable. Next, a period of interval between two reigns or governments. दो राज्यों के बीच में जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, interregnum. A place for dogs, kennel. A home for lunatics, lunatic asylum. One who compiles a dictionary, lexicographer. One who talks continuously, loquacious. One who is skilled in foreign languages, linguistic. One who cuts precious stones, lapidist. A hater of mankind, misanthrope. One who hates marriage, misogamist. A place where dead bodies are kept for post-mortem, mortuary. Working only for the sake of money, mercenary. Murder of mother, matricide. One who dies for a noble cause, martyr, जैसे कि कोई शहीद हो गया. The first speech delivered by a person, maiden speech. A place where coins are made, mint. A hater of womankind, misogynist. A place where dead bodies are kept for identification, morgue. Animals which give milk, mammals. The practice of marrying one at a time, monogamy.
A person who is sent to propagate religion, missionary. The study of coins, numismatics. A person having same name as another, namesake. A strong desire to return home, homesickness भी बोलते हैं उसको बोलते हैं nostalgia. One new to anything, an experience, जो नया होता है हर किसी काम में, novice. और उसको ये भी बोलते हैं tyro. Medicine for producing sleep, narcotic. A person who looks at the brighter side of things, optimist, आशावादी. One who has lost parents, orphan. One who is present everywhere, omnipresent. One who is all powerful, omnipotent. One who knows everything, omniscient. That which cannot be seen through, opaque. An account in the newspaper of the funeral of the one deceased, obituary. A home for orphans, orphanage. One who is skilled in midwifery, obstetrician. One who looks after horses at an inn, ostler. One who eats everything, omnivorous. One who looks at the darker side of things, pessimist. जिसको निराशावादी बोलते हैं. पोर्टेबल क्या होता है? फिट टू ड्रिंक. फिट टू ईट क्या था? एडिबल. फिट टू ड्रिंक क्या है? पोर्टेबल. An examination of a dead body, post-mortem. A lover of mankind, philanthropist. Murder of father, patricide. One who collects stamps, philatelist. Literary theft or passing of an author's original work as one's own, plagiarism. मतलब किसी ऑथर का काम जो कि उसने ओरिजिनल किया है उसको चुरा के अपना नया बना देना, plagiarism. The practice of marrying more than one wife at a time. Marrying more than one wife को बोलते हैं polygamy. Marrying more than one husband को बोलते हैं polyandry. A lover of womankind, philogynist. A decision made by votes of all qualified citizens. मतलब जो सभी क्वालिफाइड सिटीजन की वोट्स के बाद कोई डिसीजन लिया गया हो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट. One who amuses himself by love making, philanderer. One who does not care for art and literature, philistine. Government by the rich, plutocracy. An imaginary name assumed by an author for disguise, pseudonym. A child born after the death of his father. चाइल्ड अपने फादर की डेथ के बाद बोर्न हुआ उसको बोलते हैं पोस्थ्यूमस. जहाँ द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ए राइटर उसको भी यही चीज बोलते हैं. ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, पैनिकिया. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चन. ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीजेस. चाइल्ड डिसीजेस के लिए क्या होता है? पीडियाट्रिशियन. ऑर्डिनरी रिमार्क्स आफ्टर ऑफन रिपीटेड, प्लेटिट्यूड. One who makes a vain display of his knowledge, pedant. One who speaks many languages, polyglot. The study of ancient writing, paleography. A number of policemen called to quell a riot, pos. Pledge given by a prisoner for temporary release, not to escape, parole. जिसमें प्रिजनर टेम्पररी रिलीज के लिए एक प्लेज देता है कि वो एस्केप नहीं करेगा, पैरोल. वन हु गोज ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन. दैट कैन बी कैरीड इजीली, पोर्टेबल.
An act of separation from other persons to avoid infection. Quarantine. The art of elegant speech or writing. Rhetoric. Murder of king or queen. Regicide. Violating or profaning religious things. Sacrilege. One who cuts in stones. Sculpture. Murder of oneself. Suicide. A place for horses. Stable. A person who walks in sleep. Somnambulist. A person who talks in sleep. Somniloquist. A thing kept as a reminder of a person, place or event. Souvenir. The last work of a writer. Last work, literary work. Swan song. One who is habitual drunkard. उसको सोट भी बोलते हैं, टॉपर भी बोलते हैं. A job with high salary but little responsibility. इसमें सैलरी ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है. Sinecure. A person who is indifferent to pleasure and pain and has control over his passion. Stoic. A place for the sick to recover health. Sanatorium. Murder of sister. Sororicide. An event which happens 1 in 3 years. Triennial. A person, student, who absents himself from class or duty without permission. Truant. One who does not take any intoxicating drink. Teetotaler, जो कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं करता. That which can be seen through. Transparent. और which cannot be seen through क्या था? Opaque. Government by religious principles. Theocracy. An extremely fond of one's wife. Uxorious. An imaginary perfect social and political system. Utopia. Murder of wife. Uxoricide. Repetition of speech or writing word for word. Verbatim. One who offers one's services. Volunteer. A woman which has no sexual experience. Virgin. Interested in and clever at many different things. Versatile. One who has a long experience of any occupation. Veteran. A fault that may be forgiven. Venial. A place for clothes. Wardrobe. So ये 200 के 200 आपने देखे होंगे, कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस. तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.